Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we're going to deal with the rest of the chapter, that is chapter 7, Animals Living and Surviving, for class 4th. So let's get started. The very first topic of this chapter is, for this lecture, is adaptation by movement. So we have in the previous lecture seen that there are various adaptations that animals are adapted to for their better survival and protection. So one of them is adaptation by movement. The point movement comes into existence for the fact that we need protection and we need various movement for even for breathing and for the various core of our existence. Now, what is adaptation by movements? How do birds move? Birds move by flying. So they cannot fly on land, they need to fly in the sky. Okay, so the term used here is aerial. They need to fly in the aerial. Okay, that's why the nature of the movement for the birds is aerial, and for the rest of the animals it's arboreal nature. For an example, monkey, squirrel. So monkey and squirrels, as you have seen, they can walk on the land and they exist on the trees also for various purposes. So they are arboreal. That means they live above the land and below the air. Now next is deer, zebra. You must have seen deer, zebra. They run very fast on the hard soil. Why? Because they have developed hooves, and hooves are the spongy material that is attached below their feet so that they can walk or run super fast. Next is tiger, lion. You must have seen them. They have padded feet for better running and claws. It is why do they need claws? Look, tiger and lion are carnivorous animal. They need to predate. They need to find their prey, and to grasp their prey they need claws. So that's why they have claws. Let's deal with this topic in Hindi. आपको पता है एडेप्टेशन बाय मूवमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम सांस भी लेते हैं तो भी हमारी मसल्स मूव करती हैं, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें एडेप्टेशन की ज़रूरत है. हमें जीने के लिए एडेप्टेशन की ज़रूरत है. तो बर्ड्स किस तरह से अडेप्ट करती हैं? बर्ड्स को हम एरियल नेचर ऑफ एडेप्टेशन में रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो उड़ती हैं. उड़ती कहाँ है? एयर में, आसमान में उड़ती हैं. ज़मीन पे तो नहीं उड़ सकता है कोई, ज़मीन पे सिर्फ चल सकते हैं. तो इसलिए बर्ड्स एरियल नेचर की होती हैं क्योंकि वो फ्लाई करती हैं. एनिमल्स किस नेचर की होते हैं? आर्बोरियल नेचर के होते हैं. क्यों? क्योंकि वो ट्रीज़ के ऊपर कूदते हैं. मंकीज़ को देखा होगा, एक ट्री से दूसरी ट्री की तरफ कूदते रहते हैं और वो ज़मीन पे भी चल सकते हैं, तो इसलिए हम उनको आर्बोरियल कैटेगरी में रखते हैं. अब कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे, जैसे कि डियर है, ज़ेब्रा, ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं सॉइल पर. ठीक है, अगर हार्ड सॉइल मिल जाए इनको तो ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं. क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि उनके पैरों के नीचे हूफ्स लगे होते हैं. हूफ्स क्या होते हैं? स्पॉन्जी मटेरियल होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी जंप करके मूव करते रहते हैं. अब दूसरा है टाइगर लॉयन. टाइगर लॉयन के जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, यानी कि उनके नीचे भी हल्का सा कुशन लगा होता है, और उनके जो पंजे होते हैं उनके साथ उनके पैरों में बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं, ताकि वो, क्योंकि वो मीट खाते हैं तो उनको कैच करने की ज़रूरत होती है प्रे को, और पंजे उसमें हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम्स. सो व्हाट इज़ एक्सट्रीम्स? एक्सट्रीम्स आर द कंडीशंस वेयर द नॉर्मल लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव. Now we have seen only two extreme conditions, that is extreme cold or extreme hot, right, or extreme heat. So what is extreme cold? So you must have seen you must have seen in the movies or on the TV shows that penguins that are found, that live in the coast of Antarctica ocean. So what happens? For how are they able to survive in that much of cold? The reason behind this is adaptations. They are adapted to certain features, or they have certain features in them that are enabling them to survive in that extreme cold. So what are those adaptations? Those adaptations are thick fat layer over the body. So over their body they have a very thick fat layer. So what is the function of fat provides a cushion like protection for the under skin, so that cold cannot destroy that part, right? And next one is waterproof coat of feathers. They also have feathers keep them warm, though they do not fly. They are not flight birds, they are flightless birds. They are strong swimmers, but still they have feathers. Why? To keep themselves warm. Next one is mountain goats. So what is mountain goats? Mountain goats are the goats, special kind of goats that live in the mountains, and when the ice falls there, so when there is a snowfall on the mountains, these goats turn their colors to white in winter. Why so? Because in winter snow is there, so they have a chance to get spotted among that snowy
cover, so they turn themselves white, right? This is one of the basic adaptive features for their survival. Next one is snow leopard. As the name suggests, snow leopards, it lives in snowy area, and that is Himalayas. Look, it is no longer living there. Why? Because it is an extinct species. Why? Because it has been hunted by the humans for its thick and beautiful fur coat that is being sold in the market at very higher rates to earn profit. Man is ruthlessly killing them. Next, you must have seen the yak. You must have studied about the yak, that it lives in Himalayan region. It looks like an oak and it has long hairs. Why long hairs? To protect itself from cold. Now, extreme heat. You must have seen camels. Camels live in deserts, and they are known as the desert animals. They can live without water for months. They can live without water for months. Why? Because when they are given water, they have the capacity to drink at least 200 liters of the water per day, and they have broad padded feet that help them walk into the or onto the sand. And in the time of storm, when there is the storm, then definitely sand flows in, so they block their nostrils so that the sand could not get into their body, and that's how they get protection from the storms and from the heat. Next one is insects, spider, lizards and snakes. So what does they do? They take their shelter under stones. That means they hide under the stone during the day because there is sun, there is heat. So to escape that heat, they hid themselves in the stones or under the stones. And during night, there is no sun. It's quite calm as compared to the day. It's quite cool as compared to the day. So they come out at the night. So let's take this topic in Hindi. एक्सट्रीम्स में कैसे सर्वाइव करते हैं? एक्सट्रीम्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो। तो हमने देखा है बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं अर्थ पे जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव करते हैं। कैसे करते हैं? हम तो नहीं रह सकते, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, वो उन्होंने डेवलप कर रखे होते हैं ताकि वो इस एरिया में रह सकें। जैसे कि पेंगुइन का नाम सुना होगा। पेंगुइन कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका में पाया जाता है। ठीक है, कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका इसलिए बोला गया है क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है, अलोंग द एजेस कहीं भी पाया जा सकता है। तो क्या होता है, क्यों इतनी सर्दी में रहता है, कैसे रह पाता है? तो उसके पीछे क्या है, कुछ एडेप्टेशंस हैं जो कि उसकी बॉडी के ऊपर है ना एक थिक फैट लेयर होती है। फैट का काम ये होता है कि वो हमें सर्दी से बचाती है और हमें प्रोटेक्शन देती है। और उस फैटी लेयर के ऊपर भी बहुत सारे फेदर्स होते हैं। फेदर्स कौन से फेदर्स होते हैं? वाटर प्रूफ फेदर्स होते हैं। अब फेदर्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये उड़ सकते हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, ये उड़ नहीं सकते, ये बस बहुत ही फास्टली स्विम कर सकते हैं। तो इसलिए इनके लिए फेदर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और फैट लेयर भी ज़रूरी होती है। अब माउंटेन गोट्स की बात करते हैं। माउंटेन गोट्स माउंटेन में रहती हैं और वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो उनको इजीली देखा जा सकता है और मारा जा सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो सर्दियों के टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर, तो वो अपने आप को वाइट टर्न कर लेती हैं। क्यों? मतलब वो अपना कलर चेंज कर लेती हैं वाइट। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? ताकि वो स्नो के कलर में मैच करें और आसानी से उनको स्पॉट ना किया जा सके। अब स्नो लेपर्ड, नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्नो में रहता है। स्नो में कहाँ? हिमालयन रीजन में ये पाया जाता था, अब ये एक्सटिंक्ट हो गया। मतलब अब इसकी कोई स्पीशीज़ दुनिया पर नहीं बची है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने उसके बहुत ही सुंदर और बहुत ही मोटे फर के लिए उसको मार कर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उसकी पूरी स्पीशीज़ विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट इज़ याक। याक भी हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ऑक्स जैसा दिखता है, लंबे लंबे बाल होते हैं सर्दियों से बचने के लिए। अब एक्सट्रीम हीट के एग्जांपल है कैमल। कैमल डेजर्ट में रहता है, बहुत दिनों तक बिना पानी के जी सकता है, लेकिन जब उसको पानी मिलता है तब की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 200 लीटर पानी एक दिन में पी सकता है। ठीक है, वरना वो महीनों तक भी प्यासा रह सकता है। अब उसके बाद उसके जो पैर होते हैं वो बड़े बड़े पैर होते हैं और पैडिड होते हैं। जैसे स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर था ना पैरों के नीचे आर्बोरियल नेचर के एनिमल्स पे, उसके में थोड़ा और ज़्यादा स्पॉन्ज होता है ताकि वो रेत पे चल सके। दूसरा ये होता है कि जो उसकी नोस्ट्रिल्स होती हैं, यानी कि जो उसकी जो नाक के जो पैसेज होते हैं वो उनको कवर कर सकता है स्टॉर्म के टाइम पे, ताकि कोई सैंड अंदर ना जाए। राइट। बहुत सारे जो इंसेक्ट, स्पाइडर, लिजर्ड, स्नेक्स जो कि डेजर्ट में रहते हैं, वो दिन के टाइम क्योंकि गर्मी होती है, सन होता है, तो पत्थरों के बीच में छुप जाते हैं और वो रात को ही बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि रात के टाइम सन नहीं होता है, थोड़ा सर्दी होती है और वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं।
The topic that has been popped up on your screens is special adaptation. So what is a special adaptation? Special adaptation is any specific feature that is restricted to a particular animal or a particular species in order to protect it from various disasters or various animals and predations. So there are three specific adaptations given in your book, that is camouflage, hibernation and migration. What is camouflage? Camouflage is the ability of any animal or of the animal that have this capability to change its color according to the surroundings and blend into the surroundings. For an example, chameleon, the common name for the chameleon is garden lizard. Okay, so you must have seen it in your gardens, in your nearby gardens. It changes its colors and hid very efficiently from the humans. Next is grasshopper. Why grasshopper is green in color? Because it needs to wander in the grasses, and to do that it need to match according to the color of the grass. That's why it is green in color. Next is stick insects. Stick insects are the insects that are wrapped around or that exist on the sticks or branches of the tree, so it gets adapted in its color like that only, so that it can stick to the trees and no one can notice it. Next is hibernation. Hibernation is deep winter sleep. In one term, we can say that it's a deep winter sleep. So during this time, heart rate of the animal and the breathing slows down. What are the various reasons for any animal to hibernate? That is, the basic reason is winter and other one is lack of food. And the various examples of these hibernating animals are lizards and snakes and polar bears also. Now next one is migration. So migration, what is migration? Migration is the movement of animals in large numbers from cold places to warm places, that is in search of food or in search of proper climate. So the various examples of this is the one that has been given in your book, Siberian crane. Siberian crane is a class of birds, that is a crane bird. So Siberian crane and the Arctic tern. Arctic tern again, it's a special class of a bird. So they travel thousands of kilometers to come to India in winter. Why in winter? Because at the Arctic tern, that is near the Arctic Ocean and the rest of the parts, it's very much cold, and in India they find the suitable climate, so they come to India after traveling thousands of kilometers, right? It could be 17,000 kilometer, it could be 9,000 kilometer, but it's counted in terms of thousand. So let's deal with topic in Hindi. स्पेशल अडेप्टेशंस बहुत ही ख़ास किस्म की अडेप्टेशन या फीचर्स होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं किस किस चीज़ को लेकर, अपनी प्रोटेक्शन और अपनी सिचुएशन में मर्ज करने के लिए। तो इसके तीन तरह की स्पेशल अडेप्टेशंस दी हुई हैं, कैमोफ्लेज, हाइबरनेशन और माइग्रेशन। कैमोफ्लेज क्या होता है? किसी भी एनिमल की ये कैपेबिलिटी कि वो अपना रंग बदल कर और जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उसमें घुल मिल सके, इसलिए इसको कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक है। तो जो इसके एग्जांपल्स हैं वो कैमिलियन, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, या हम गिरगिट भी बोलते हैं अगर कभी देखा हो पार्क्स में। तो दूसरा, ग्रास होपर का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसको टिड्ढा जो होता है, जिसको शायद राम जी का घोड़ा भी बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर, लोकल लैंग्वेज में शायद यही बोलते हैं। तो ग्रास होपर का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसको ग्रास में रहना होता है, और अगर वो किसी और कलर का हुआ तो आसानी से दिखेगा और लोग या फिर कोई दूसरा एनिमल उसको मार के खा सकता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है ताकि उसको पहचाना ना जा सके। सेम रीज़न है स्टिक इंसेक्ट्स के लिए। स्टिक इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जो पेड़ों की टहनियों पर छोटे छोटे इंसेक्ट चिपके रहते हैं उनको स्टिक इंसेक्ट कहते हैं। तो अक्सर वो जिस पेड़ पर चिपके हैं उस पेड़ का कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को बोलते हैं हम डीप विंटर स्लीप। सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि कुछ एनिमल्स है ना सो जाते हैं, मतलब महीनों तक सो जाते हैं। इसका पीछे रीज़न क्या होता है? एक तो उनकी हार्ट रेट और ब्रीदिंग बहुत कम हो जाती है, दूसरा इतनी सर्दी होती है और कभी कभी खाने की कमी की वजह से भी वो ऐसा करते हैं। यही रीज़न है कि जो छिपकलियाँ होती हैं और जो स्नैक्स होते हैं वो सर्दियों में घरों में नहीं निकलते हैं, गर्मियों के टाइम में ही वो वॉल पे आपको लिजर्ड दिखेगी और ज़मीन पे स्नैक्स दिखेंगे। अब तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा नंबर में अगर बर्ड्स या फिर कोई भी एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाए, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? एक तो सूटेबल क्लाइमेट पाने के लिए, और दूसरा कभी कभी खाना, अच्छा खाना या फिर खाना ढूंढने के लिए भी वो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न। ये हज़ारों किलोमीटर चलकर इंडिया आती हैं सर्दियों में, क्योंकि जहाँ ये रहती हैं वहाँ पे हद से ज़्यादा सर्दी होती है, उस हर सर्दी से बचने के लिए इंडिया में आती हैं।
So with this we have finished your chapter 7, animals living and surviving. Assignment would be sent to you by evening, and please read the textbook before doing the assignment. Submit your work on time. Good luck. Take care.